अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं ना आपको एक सरफेस टूल का डेमो दे देता हूँ कि लाइक हाउ वी कैन यूज दिस टूल इफेक्टिवली एंड लाइक एक मैं अपना वे बता देता हूँ कि किस तरह से लाइक हम मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं और ये किस तरह लाइक टूल काम करता है। थोड़ा सा हम जेनेरिकली भी इसको डिस्कस कर लेंगे। सो मैं आपको बताने लगा हूँ। शेयरिंग माय स्क्रीन एंड सरफेस वेबसाइट पे हमने चले जाना है एंड मैं आपको लॉगिन इसका प्रोवाइड कर दूंगा। देन यू जस्ट नीड टू लॉग इन with that credentials. Once you log in, आप इस वाले URL पे आ जाएंगे, app.surfaceo.com. This tool basically claims that the suggestions or recommendation the tool is actually giving, if you incorporate like maximum of those suggestions, you will increase your score within Surferseo, and whenever your score will increase over time, you will like get more rankings on Google on your desired keyword. So like we just use this tool for directions and not for ultimate solution. सो इसको हम एज अ फॉलो करेंगे कि एसईओ प्रैक्टिसेस जहाँ तक रेलिवेंट लग रही है हमारे आर्टिकल में, हम जस्ट वहाँ तक इसको यूटिलाइज करेंगे. सो देयर लाइक more than like 2 or 3 I guess parts that this tool does for you. Like first of all, rank your content with the power of AI. AI means it uses actually NLP terms. NLP natural language processing machine learning एक algorithm है, उसकी बेस पे ही आपको suggestions दे रहा होता है through the competitors that actually ranking on your primary keyword. So ये आपको suggestions देता है and you just need to optimize your content against that suggestions or सो इसमें देखिए एनएलपी बेस्ड algorithms आ रही होती हैं मेनली, एंड देन इसमें होता है कि फर्स्ट ऑल यू कैन क्रिएट योर परफेक्ट स्टडी. इट्स लाइक जस्ट वन ऑफ द पार्ट ऑफ Surferseo. Like you can plan your content calendar in advance for 3 months, for 6 months, etc. And you just like put your main category and it's break like topics into even with their keywords and with their intent and their search volume of all those terms actually. सो कंटेंट प्लानर हो गया, उसके बाद क्रिएट करते हैं. यू कैन एक्चुअली create your article outline through AI suggestions based on competitors. So we have used this part as well. It's just like scrape the overall competitors heading and just place them into a unique order through AI. But I guess I feel that if we do this process manually, we get some more human suggestions possible. हम उसको अपने एंड से ज़्यादा कस्टमाइज वे में लेके चल सकते हैं. एंड अगेन इफ़ यू यूज़ दिस टूल, हमें ये जो आउटलाइन की हमें बता रहा होता चीज़ें, हमें दोबारा से उनको अपने एंड से रिव्यू करना पड़ता है. इवन सारा उसको स्क्रैच से दोबारा से सेट करना पड़ता है. सो इट्स बेटर कि हम आउटलाइन जिस तरह बना रहे हैं कंपेटिटर्स की, उस तरह ही बनाए मैनुअल जाके कंपेटिटर्स की हेडिंग कॉपी करके, एंड देन उनकी एंगल, वर्डिंग एंड इवन ऑर्डर एंड कॉमन थिंग्स रखते हैं, डुप्लीकेट निकाल देते हैं, एंड देन हम उसमें यूनिक चीज़ें ऐड करते हैं थ्रू डिफरेंट फॉरम्स जहाँ पे लोग उस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे होते हैं. सो दैट्स लाइक another process. वो मैं किसी दिन उस पर भी इस तरह की डेमो बना दूंगा. So after that you just wanna if you wanna write your content in Surferseo, तो आप अपने कीवर्ड यहाँ पे एंटर करते हैं in content editor. उसकी एक फीचर है एंड इट डज बेसिकली आपको वहाँ से सारा एक कंपेटिटर्स उस कीवर्ड के अगेंस्ट निकाल के देता है और उनकी फिर टर्म्स वगैरह जो उनकी टॉप कॉमन टर्म्स होती हैं उनको उनका एक क्लाउड बना के आपको सम हाउ क्लस्टर बना के आपको दे देता होता है. लाइक यू कैन सी ऑन द राइट साइड के एक पैनल आपको शो हो रहा होगा जिसमें आपको स्कोर नजर आ रहा है, योर ओवरऑल आर्टिकल स्कोर बेस्ड ऑन Surferseo सजेशन, एंड नीचे टर्म्स भी आ रही हैं. एंड अगेन टर्म्स के अलावा इसके पास स्ट्रक्चर वाइज भी स्टेशन होती हैं लाइक तो लाइक आप इनकॉर्पोरेट करके अपना स्कोर इंक्रीज करवा सकते हैं. Last thing is audit. If you have like written hundred of pages in your website already and you want them audit through Surferseo, so you just like enter your primary keyword and associate with a target URL that you want to optimize for. So this tool does कि वही same pattern रखते हुए and again with some more SEO suggestions like technical audit भी कर देता है उस पेज का around that keyword और वो आपको सारी suggestions दे देता है. And again you just wanna like
incorporate those suggestions and your score will increase over time, and definitely you get more ranking. But I'll like I also share my theory that we have basically using this tool like for around 1 year, and we have seen much results so far. And the article we have like ran basically A/B testing that articles written through Surferseo and versus article written through without Surferseo, like through some third-party tools for keyword research like Ahrefs. So we have seen that the article written with Surferseo are actually ranking on more keywords, like getting traffic through various combinations of term and different diversify of the keyword. So that's how Surface work. Let me go to the actual part, which is like practical of the tool. I'll like show you a quick example. Like यहाँ पे मैंने editors create किए हुए हैं. This tool actually gives you 10 editors, like content editors for a month and 20 audios for a month. एंड या इफ यू आपका ये एडिटर एक चल रहा होता है कि अगर आप एक यूज कर लें तो यहाँ से एक कैंसिल हो जाता है, विच मीन्स कि वी हैव टू बी लाइक ऑन द वी हैव टू बी लाइक एंटर दोस टर्म दैट एक्चुअली वी वांट टू राइट फॉर. कोई फजूल टर्म्स हम जैसा फॉर टेस्टिंग नहीं ऐड कर सकते क्योंकि जिस पे हमने एक्चुअल कंटेंट लिखना है उसको ही हम ऐड करें, क्योंकि बिकॉज वी हैव लाइक लिमिटेड नंबर हेयर. तो जिस तरह आप एक कंटेंट ऐड हुआ हुआ है, मैं इसका आपको डेमो दे देता हूँ. इट्स लाइक प्रोडक्ट रिव्यू ऑफ नेस्प्रेसो मशीन. तो मैंने क्या किया, इसको ओपन कर लिया. बिफोर दैट मैं क्या करना था, मैंने जस्ट यहाँ से ऑन द डैशबोर्ड साइड I will go to this editor and just paste my keyword like Nespresso machines, let's suppose, right? So अभी इस तरह हमने किया हुआ ऑलरेडी, कुछ टॉपिक्स हैं वो उनको ही आपको आइडिया देता हूँ, एंड देन यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं. एंड यू जस्ट लाइक आल्सो सिलेक्ट योर लैंग्वेज. आई गेस दिस इज लाइक आई गेस टारगेट ऑडियंस, वेयर योर टारगेट ऑडियंस इज. आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं. एंड यहाँ से आप कंटेंट कॉलर टाइप मोबाइल एंड डेस्कटॉप कर सकते हैं. सो वी हैव ऑलरेडी डिड दैट. सिंपल टॉपिक एंटर करने के बाद दिस टूल एक्चुअली मैंने जो भी बता रहा था कि इसने कंपेटिटर्स स्क्रैप कर दिए हैं अगेंस्ट दिस कीवर्ड जो टॉप के रैंक कर रहे हैं, एंड बेस्ड ऑन दोस कीवर्ड इसने कुछ बाय डिफॉल्ट हमें सजेशन इधर ऐड करने शुरू कर दिए हैं. नाउ इट्स टाइम के check if these suggestions are relevant and incorporate only those suggestions that fit naturally in your article. Starting with the first thing, content score, and this is the score that based on those things, if you optimize for this thing like word count, इस रेंज में अगर आप बात कर रहे हैं अपने आर्टिकल में इतनी हेडिंग्स यूज कर रहे हैं, पैराग्राफ, इमेजेस, तो आपका स्कोर बढ़ेगा. एंड सेकेंड पार्ट इज टर्म्स. ये सारी वो वाली टर्म्स है कि जो आपको वो सजेस्ट कर रहा है. एंड ऑल्सो द रेंजेस ऑफ द टर्म, लाइक इफ यू यूज दिस टर्म 4 to 19 times, this will turn into green and your score will increase here. So अगर आपने like रेंज में यूज नहीं की हुई बट 1 or 2 टाइम कम से कम यूज किया तो ये टर्म येलो हो जाएगी. जिस तरह ये वाली टर्म है एस्पेशल वर्चू प्लस डिलक्स, ये आपने वन टाइम जस्ट यूज किया बट नॉट इन दैट पर्टिकुलर रेंज, योर टर्म दिस टर्म एक्चुअली टर्न इनटू येलो. और जब आप इसको 5 से ज़्यादा दफ़ा या एटलीस्ट 5 दफ़ा यूज़ करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगी. सो दैट्स ऑल फॉर ऑल द टर्म. The most important thing I would like to say here is like the terms are automatically sorted from highest priority to lowest priority, which means the upper section terms are like more important. But again, you have to check all the terms naturally. Sometimes this term can be fixed, can easily be adjusted into your article. So just incorporate what fits naturally in your article. So moving to the most important part, customizer. So this is the customizer. अगर आपको कुछ suggestions अपने आंसर tweak करनी है, you wanna like write something specific, आपकी कोई audience है, specific competitors है, तो आप यहाँ से adjust कर सकते हैं. You can toggle on, toggle off your competitors. कोई आपको यहाँ let's suppose जब competitor लग रहा है तो इसको आप check कर लें, ये आपको नहीं लग रहा है तो इसको आप uncheck कर लें. And it definitely re-optimize its suggestion if you like add or remove some of the so those competitors. तो यहाँ से आपको एक अच्छा एनालिसिस व्यू भी मिल सकता है, लाइक कंटेंट स्कोर ऑफ दोस competitor in according to Surferseo suggestions के जो हमें वो suggestions दे रहा है. It also suggesting के इन competitors ने वो terms कितनी अपने article में use की हुई हैं. Like this one you can see it's like having a good score out of 100. And
The second part is authority. Authority, even it increases over time when you build high quality, high authority backlinks. But at this time, we can see that, let's suppose this article has written around 6,000 words, and it said like 10 like maximum authority, and it has like 63 score. We can like definitely figure out some of the reasons that why this page is ranking on the top with either with high word count page, or either with good authority, or either with best Surferseo score. So we can easily figure out like this page is like ranking on 4 and this page is ranking on 7, but you can see there's like half difference of word count between them. But why this ranking on top, since you can see this has 8 authority and since it has 6 authority? So maybe this can be a reason that this is ranking due to its authority. But again, we can there can be also reasons like the content quality and even the relevancy against the around the topic of this particular website. So we can definitely figure out like why these pages are ranking on top and what they have done so far, and how we can actually replicate their success into our article writing overall. So this is how the main competitors view works. And you can even customize more competitors if you are like not satisfied with the top 10 results. You can even load more competitors right here. I guess 20 competitors there will be. Yeah, so this is how you can actually incorporate some more suggestions. This is the content structure part. To be honest, we are actually not following this because we have our own content structure according to the outline we actually finalize at the start of the writing. Like if we finalize the outline, definitely we finalize the outline according to the user intent. So we definitely like you can say decide the word count based on the intent. If the intent is fulfilling in like just 1,000 words, so we just go for that. And if like taking us to write around 5,000 word, we go for that. So this is not just like it's actually getting here the averages of top competitors, like how many headings they have optimized for, and it's just showing us the averages. But this is not how SEO works. We have to come up with our unique strategy, not just copying the competitors. And even Google knows that आप competitors को copy कर रहे हैं, and what you are like doing new for Google and its users. So we just have to keep that in mind. But again, if you want to play with this, like if you're writing 4,000 words, you'll see this increases over time over here. Okay, so last thing is, I guess second last thing is terms to use. This is all about what we will be like optimizing our content for. This is like terms to use. Again, NLP suggests natural language processing terms. Again, like 30 competitors or 20 competitors, it combines together and scrape their NLP terms and put together into one editor. You can see all of those terms here. And this is the term that it's yeah, this is the term that you have included, like you have like checked them. And if you uncheck them, this will come into include terms all. Okay, so you can even customize your term, like if you like want to use this term or use this term based on the relevancy, तो आप उसको ऐड करें. और कोई term आपको relevant लग रही तो आप उसको यहाँ से uncheck कर दें. So ये आपको वहाँ पे based on your customization जो आप यहाँ पे कर रहे हैं, वहाँ पे आपको suggestion उसके according देनी शुरू कर देगा. So some of the terms you can even mark as heading. इसका ये term मुझे लग रही है कि मैं इसको as a heading mark कर लूँ. So मैं इस पे H पे click करूँगा and this term is marked as heading. And this term is, I guess, हाँ, यहाँ से आप ignore term भी कर सकते हैं. But again, it's like up to you based on your experience जो आप experience create कर रहे हैं for the user. You just have to spend some time here for to see like how we gonna customize those terms. And again, this depends upon overall our relevancy. अगर हमारा अच्छी relevancy होगी तो हमारा article rank करेगा. We don't just like हमने blindly अपना score increase नहीं करना based on अगर relevant terms भी हम use कर रहे हैं तो इस तरह नहीं होगा. हम जो चीज़ work कर रही है उसको use करेंगे, चाहे हमारा score 80-70 पे भी चला जाए, there is no issue. वो मैं स्कोर पे भी आता हूँ कितना स्कोर विल बी आइडियल फॉर अस. लास्ट थिंग इज टॉपिक एंड क्वेश्चंस. These are actually all of the questions that this tool is suggesting from two sources. Actually, people also ask PAA and competitors.
यू नो कि पीपल आल्सो आज गूगल पे कुछ टर्म सर्च करें, एक टी डबल ए बॉक्स आ जाता होता है, ये वहां से आ रहे हैं क्वेश्चन. नाउ इट्स योर टाइम टू गो थ्रू ऑल ऑफ द पेजेस, लाइक 12 पेजेस हैं. नाउ you can even check or uncheck some of the like questions that you feel relevant or irrelevant. तो आपको यहाँ से भी एक अच्छा व्यू मिल रहा है to customize your suggestions. Okay, so this is how it works, and let's go. आप कर लें जब आप इसको when once you are done with customizing part, and यहाँ पे अब आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे suggestions मिल रही है. Now come to the actual part score. इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि some of the writers actually कुछ आर्टिकल्स की मैं बात करता हूँ, राइटर्स की बात नहीं करता. कुछ आर्टिकल का स्कोर 90 प्लस भी हमारा हो जाता है, कुछ आर्टिकल का स्कोर 70-60 पे भी जाता है. बाय दिस एक्चुअली हैपेंस कि सरफेसियो को जो हम कीवर्ड देते हैं, लेट्स सपोज ये कीवर्ड दिया, उसके अगेंस्ट उसको उतनी रेलिवेंट सजेशन मिली ही नहीं है कि वो हमने जब ज़्यादा यूज़ नहीं की सजेशंस वो वाली टर्म्स, तो हमें स्कोर कम अपना मिल रहा है. इफ सरफेसियो लाइक successfully bring like number of relevant terms, अगर उसकी 100 में से लेट्स सपोज 95 टर्म्स रेलिवेंट हैं, तो वो हम अगर 95 यूज करेंगे तो लेट्स सपोज हमारा स्कोर इधर 96 97 पे भी जा सकता है. सो दैट्स हाउ वी नॉट गोना ब्लाइंडली फॉलो द ओवरऑल स्कोर ऑफ द सरफेसियो, बट हम इसमें ये करेंगे कि लाइक as far as our article looking natural, वहां तक हम स्कोर ले जाएंगे. तो आई गेस 80 इज लाइक अ गुड स्कोर, एंड अगेन 90-95 तक भी आपका स्कोर इजीली जा सकता है, कीपिंग योर आर्टिकल नेचुरल. तो आप उसको जरूर लेके जाएं. ठीक है. सो ये आपके सामने क्वेश्चंस आ गए हैं, वो वाले आउटलाइन बिल्डर भी है, जिस तरह की कुछ हेडिंग्स आपको सजेस्ट कर रहा है, बट अगेन इट्स लाइक ऑल EI स्क्रिप्ट, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि हम इनको देखें भी. रीज़न बीइंग के इन पे एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, इनको कस्टमाइज करते हुए, इनको अपने एंगल में एडजस्ट करते हुए. तो बेहतर नहीं कि हम खुद ही कंप्यूटर्स का जो एक प्रोसेस है वहाँ से हेडिंग्स देख के और यूनिक एंगल हम खुद एक्सप्लोर करें विदाउट जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग दिस टूल. ठीक है. ब्रीफ ये कंपेटिटर्स वो कुछ यहाँ पे आपको दे रहा है, बट अगेन कंपेटिटर्स मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ इन द फर्स्ट प्लेस, लाइक व्हाट कंपेटिटर्स यू गोना राइट कंटेंट अगेंस्ट, तो आपको वहाँ से भी आइडिया मिल रहा होता है. तो मैं कंपेटिटर्स आपको देता हूँ इन द फर्स्ट प्लेस, तो वहाँ से आपको अच्छा सजेशन वाइज चीज़ें भी मिल रही होती हैं. एंड लास्ट थिंग, यू कैन एक्चुअली राइट योर कंटेंट हेयर फ्रॉम स्क्रैच. इट्स लाइक अ बिल्ट इन हैंडसम एडिटर, आप यहाँ से देख सकते हैं. एंड some of you, if you like wanna write content in Google Docs, आप used to हैं, तो आप Google Docs में content लिखें, and you just have to see terms here. आप यहाँ से term देखें और वहाँ पे जाके naturally use कर दें. ये वाली term देखें, इसको naturally use कर दें. So this gonna work this as like this as well. आप वहाँ पे Google Doc में सारा content customize कर लें, edit draft बना लें, and यहाँ से terms देख देख के फिर वंस आप डन हो जाए तो यहाँ पे जो स्पेस कर दे अपना आर्टिकल, और आपका स्कोर उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. But if you're comfortable with writing here in the first place from the start, go for it. यहाँ पे आप लिखे content, और यहाँ पे अगेन फॉर्मेटिंग इश्यूज आ जाते हैं. टेबल्स वगैरह में आप यहाँ पे टेबल्स नहीं बना सकते हो, तो टेबल्स वाली चीज़ आई गेस मैं सजेस्ट करूँगा गूगल डॉक में ही रखें. तो अगेन प्ले विद दिस टूल, टेस्ट मल्टीपल थिंग एंड कम अप विद यूनिक आइडियाज कि इसको हम और मजीद किस तरह के वेज है जिस तरह हम इस टूल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. And if you have like any question, any query, do let me know. I'll be like more than happy to answer your any kind of question. ठीक है. So thank you so much. मैं इसको लॉगिन शेयर कर दूंगा, इसको आप फिर लॉगिन कर लेंगे. ठीक है. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.